Hello friends and dear students, welcome to my maths channel Mathscape. In today's video, we'll discuss the various methods of the solving the linear equation or the simple equation. And this is a chapter from the 7th class, as you can see on the board here. So I have already jotted down some methods how to solve this simple equation. So the first method that we need to discuss here, so that is the trial and error method, and it is also called a hit and trial method. So next method we are having the balancing method or the systematic method. So in other classes, so this method is also called the systematic method. And the last method, but not the least, so we will discuss the transposing method. So let us start this video here. तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल का मतलब क्या होता है? सो व्हेन यू हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम हियर, यू आर कीपिंग ट्रायल्स। तो आप बहुत सारे कोशिश करते हो क्या किस तरह से हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x + 3 = 7, सो दिस इज द सिंपल इक्वेशन हियर। तो यहाँ पर जो सिंपल इक्वेशन है, व्हाई इट इज सिंपल? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल x हैज डिग्री 1. सो विद दिस, that is why it is called the simple equation. And in other classes, this simple equation is also called the linear equation. तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन में या सिंपल इक्वेशन में इसका एक सॉल्यूशन, सो इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन. सो दिस सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन. ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो x है, x का खाली एक वैल्यू होता है, वन वैल्यू. So that means we need to find the value of x so that the left hand side will be equal to right hand side. अब यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? सो विल पुट द डायरेक्ट वैल्यू टू x. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हम वैल्यू देंगे x का, बट वी डोंट नो विच वैल्यू विल बी सेटिस्फाइड, सो वी कीप ट्रायल्स. तो यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स लेंगे ताकि जो ये एरर है, बिकॉज जो एरर यहाँ पर है, एरर मीन्स व्हाट हियर, जब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे किसी भी वैल्यू से, तो यहाँ पर वी हैव टू कीप द ट्रायल्स एंड विल पुट द वेरियस वैल्यूज ऑफ x. तो वो वैल्यू, इसमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, जिससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर पुट x is equal to, I don't know which value will be satisfied. तो यहाँ सबसे पहले कोशिश यही कि क्या करनी है. Now this, since this equation contains the smaller values, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर is equal to 7 है, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू बनता है वो छोटा बनता, छोटा होल नंबर बनता है. ठीक है? तो एंड इट हैज ओनली वन पर्टिकुलर वैल्यू, खाली x का एक वैल्यू ऐसा होगा जो सेटिस्फाई करेगा किसमें, इस इक्वेशन में. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द होल नंबर, सो दैट इज 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. नाउ लेट अस पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन. तो कोई वैल्यू ऐसा होगा जो इसमें सेटिस्फाइड होगा. सेटिस्फाइड मीन्स वर्क क्या है? सेटिस्फाइड का मतलब ये है, यू विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट, the trial and error method. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम? तो first of all we'll put the x as 0. तो it becomes here 2 into 0 plus 3 is equal to 7. So it becomes here 3 is equal to 7. And you know that 3 is not equal to 7. So we say that जो x है, x is equal to 0 is not the solution. ये इसका solution नहीं है, because you know that 3 cannot be equal to 7. So let's putting some more values to x here.
चले मैं यहां पर लूंगा x का वैल्यू हम लेंगे यहां पर 1. सो विद दिस विल गेट 2 into 1 plus 3 is equal to 7 here, and you know that 2 plus 3 is equal to 5, so 5 is equal to 7. Again 5 cannot be equal to 7. तो जो x का वैल्यू हमने यहाँ पर 1 दिया तो ये भी इसमें सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड is not equal to the right hand side. So we say that x is equal to 1 is not the solution. ये इसका solution नहीं है. Okay, now let us put some more values to x here. एक और वैल्यू यहाँ पर देंगे हम. तो I am putting x is equal to 2 here. तो यहाँ पर x का वैल्यू हम 2 देंगे यहाँ पर. So we'll get here 2 into 2 plus 3 is equal to 7 here. So 2 to the 4, 4 plus 3 is equal to 7 here. So 7 is equal to 7. And you just see here the left hand side यहाँ पर क्या बनता है? Left hand side is equal to right hand side. So we say that the value as x when x is equal to 2 here, जो x का value 2 होता है, now this x is equal to 2 satisfied into this equation, क्योंकि इसके जरिए क्या हुआ? Left hand side, you are getting left hand side is equal to right hand side. So x is equal to 2 is the solution of given equation. Okay, now let us discuss about the balancing method or the systematic method. तो ये मेथड दिखाने के लिए सबसे पहले I will tell you one thing. You just recall the Euclid's first postulate. जो Euclid's first postulate है, it says that when you are adding or subtracting or dividing or multiplying equals to the equals. For example, हमारे पास एक equals है x is equal to 2. Now I am adding the equals to this equals here. Equals means what? The equation. So I am adding equals x plus 2 is equal to 2 plus 2. तो इक्वल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को प्लस 2 किया, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को मुझे 2 प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू बैलेंस दिस. हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है x is equal to 2. नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड प्लस 2 हियर लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड उसको भी प्लस 2 करेंगे. द होल इज इक्वल. द होल इज, फॉर एग्जाम्पल, इट बिकम्स x plus 2 is equal to 4 here. Now this thing and this thing, now these are equals. ये equals है, so it makes no effect. The value remains same. The value remains same. Now this is what? This is the first postulate of the Euclid. इसी तरह से when you are subtracting the equals to the equals, the whole is equal. In the same way here, when you are dividing or multiplying the equals to the equals, the whole is equal. तो इसी मेथड्स जो ये हमारे पास जो फर्स्ट पोस्टलेट है, फर्स्ट पोस्टलेट से ही बन गया कौन सा मेथड? बैलेंसिंग मेथड. चलिए अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग मेथड होता क्या है. सो हाउ इट वर्क्स. ओके, तो यहां पर मैं ये रब ऑफ करूंगा. ओके, नाउ आई विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल हियर, वन ऑफ द इक्वेशन हियर. मैं लिखूंगा 2x plus 5 is equal to 6. Now this is the simple equation here, and I have to find the value of x by using the balancing method or systematic method. तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में खाली वेरिएबल रहना चाहिए. जो भी इसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 is there, 5 is there, so we have to vanish 2 and 5. तो यहाँ पर क्या है? So we have to separate x from the constants. तो एक तो ये बात है. दूसरी बात क्या है? आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या वेरिएबल रखना है, तो राइट हैंड साइड से आपको कॉन्स्टेंट्स रखने हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास 2 और 5 है, तो 2 और 5 को हमें खत्म करना है. अब हम खत्म कैसे करेंगे, वैनिश कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या, यू कैन नॉट वैनिश दिस 2 डायरेक्टली. आप पहले सबसे पहले क्या, आप 2 को वैनिश नहीं, खत्म नहीं कर सकते बाय यूजिंग बैलेंस मेथड.
तो सबसे पहले इन एनी सिंपल इक्वेशन जब भी आपके पास +5 होगा या -5 होगा, जो भी प्लस और माइनस कोई भी डिजिट होगा, तो सबसे पहले खत्म क्या होता है, सबसे पहले खत्म होता है प्लस और माइनस। तो उसके बाद बारी किसकी आती है, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 इज मल्टीप्लाइड बाई x, और अगर मैं लिखूंगा x डिवाइड बाई 2, तो उसके बाद बारी आती है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। तो सबसे पहले बारी किसकी आती है, प्लस और माइनस की। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग मेथड क्या है, अब यहाँ पर वी नीड टू वैनिश द 5, तो 5 को हमें खत्म करना है। तो 5 को कैसे खत्म करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा 2, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2, 2 इज -2। तो जो 2 होता है इसको खत्म क्या करेगा, -2 ही करेगा इसको खत्म, बिकॉज व्हेन यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्ट 2 -2 यू आर गेटिंग 0। सो दैट मीन्स 0 का मतलब क्या है, 2 और 2 खत्म हो गया, 2 और 2 खत्म हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो 5 है 5 को हम खत्म करेंगे। तो 5 कैसे, ओके, द लास्ट मेथड इज द ट्रांसपोजिंग मेथड। तो जो लास्ट मेथड हमारे पास नंबर 3rd मेथड, सो दैट इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिंग मेथड। And sometimes this method is also called the shifting method. So, okay, now this is the last method for solving the linear equation or the simple equation. So this method is called the transposing method or shifting method. Now, and this is the most common method which is used to solve the linear equation or the simple equation. So now let us
डिस्कस अबाउट दिस ट्रांसपोजिंग मेथड, हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर मैं लूंगा कोई भी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर 5x plus 7 is equal to 9. Now this is the simplification here, and we are going to use the transposing or the shifting method. So as far as this method is concerned here, तो यहाँ पर shifting और transposing का मतलब भी होता है क्या, एक किसी चीज को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है किसी भी इक्वेशन में, वो x आपको यहाँ पर वेरिएबल रखना है, यहाँ पर रखना है कॉन्स्टेंट्स। सो दैट मींस वी नीड टू ट्रांसपोज व्हाट हियर आर शिफ्ट 7 इनटू द राइट हैंड साइड एंड द 5 इनटू द राइट हैंड साइड। तो दोनों को हमें शिफ्ट करना है, कहाँ, 5 को भी और 7 को, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से, जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर हमें इसको पहुंचाना है। बट तो विद द but in a systematic way, so systematic way हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले when you are going to shift the numbers into the right hand side, तो सबसे पहले क्या, जो कोई भी नंबर होगा अगर वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो सबसे पहले शिफ्ट इनको करना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग करोगे वो आपको करोगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस एंड नेक्स्ट प्रेफरेंस इज व्हाट, द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में देयर इज 5x plus 7 is equal to 9 here। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल शिफ्ट व्हाट, दिस 7। तो शिफ्ट को हम 7 को हम शिफ्ट करेंगे इनटू राइट हैंड साइड। सो विल गेट हियर 5x is equal to 9। Now by shifting, now this since this 7 is in left hand side, so it has sign plus, so when you are going to shift or transpose to the right hand side, तो यहाँ पर आपको क्या, इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा, so it becomes -7 here। तो ये चीज आपको क्या माइंड में रखनी है while shifting the numbers। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा when you are shifting माइनस, चले ये लेफ्ट हैंड साइड है, this is right hand side। So when you are shifting minus into the right hand side, it becomes plus. And when you are shifting plus into the right hand side, it becomes minus. And when you are shifting multiplication, it becomes what? The division. Or similarly, when you are shifting division into the right hand side, so it becomes a multiplication. So these are the ways, these are the rules while shifting the numbers into the right hand side. Okay, now it becomes here 5x is equal to 9 minus 7 is 2 here. Now we are going to shift what, the 5 into the right hand side. So what is the relation between these two numbers? तो यहाँ पर जो relation है 5 and x का multiplication है, तो यहाँ पर जब आप shift करोगे into the right hand side, तो it becomes what here, x is equal to 2 divided by 5. So 2 divided by 5 is equal to what, 2। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या आप यूज करोगे ट्रांसपोजिंग मेथड एंड शिफ्टिंग मेथड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड this long video of this simple equation. Now this is just the introduction to the simple equation, and you'll get some more videos of the simple equations in next video. And if you want to watch all these videos, and you just subscribe my channel. Have a nice time. Thank you.